Hi guys, I'm Nikita Rai from Vipin Rai Education. Let us begin with the lesson number 1 of Economics Introduction to Micro and Macroeconomics, which is new syllabus of 2020 and 2021. So I will reveal you answers of this lesson. So let us begin with. This is exercise question number 1. Question number 1, choose the correct option. So the question is the branches of economics that deals with the allocation of resources. The correct option is only third option, only A, microeconomics. Second is concept studied under microeconomics. So the options are national income, B general price level, C factor pricing, D product pricing. If you have seen the textbook, after these options there is also for more four options. From that the fourth option is C and D. So the correct option is option number 4, C and D. Now third, method adopted in microeconomic analysis. Third, only slicing method is adopted or used in the microeconomic analysis. Uh, Concepts studied under the macroeconomics are whole economy, economic development, and aggregate supply. This is undertaken in the first option, that is option number 1, A, B, and C. D is product pricing, which is included under the scopes of microeconomics, so it is not in macroeconomics. Uh, Question number 2, complete the correlation. First, microeconomics slicing method, macroeconomics lumping method. Second, microeconomics tree and macro is forest. Macroeconomic theory, income and employment. Microeconomics theory of product pricing. Then macros, macroeconomics, micros, microeconomics, general equilibrium, macroeconomics, and partial equilibrium, microeconomics. So let us begin with the question number 3. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन. यहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कंसेप्ट क्या है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन भी देना है आपको. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म. तो ये उसने किसके बारे में कलेक्ट किया है, पर्टिकुलर फर्म के बारे में. तो ये दिस कंसेप्ट इज अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. Microeconomics means a small part of a thing. Or microeconomics deal with the small part of the national income. It studies the economic action and behavior of individual unit as given in the above examples, such as individual consumer, individual producer or firm, etc. Question number 2. I have written in the very simple language that will be understandable to you. If you don't understand, please comment in the comment section. I will give you explanation video also. Question number 2. Ramesh decided to take all the decisions related to the production, as what and how to produce. This is free market economy, which is under the importance of microeconomics. A free market economy is that economy where the some decisions regarding production of goods, such as what and how to produce, are as such. The above example are taken at the individual level. There is no intervention by the government or any other agencies. इसका मतलब ये है कि जो ओनर होता है पर्टिकुलर फर्म का, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि कितना और क्या प्रोड्यूस करना है. इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं देती है और कोई एजेंसी भी नहीं. इसके पहले जो ये था, जो इसके पहले की इकोनॉमी थी, उसमें ना गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या और कितना कितना प्रोडक्शन करना है. अगर वो एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे ज़्यादा होती थी, तो उनको ये परमिशन नहीं दी थी. तो इसके लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट concept under the importance of microeconomics. Shabana paid wages to workers in her factory and interest on her bank loan. Theory of factor pricing, which is under the scopes of microeconomics. Microeconomics helps in determining the factor involved for land, labor, capital, and entrepreneur in the form of rent, wages,
interest and profit respectively. In the above example, Savannah paid wages to worker and interest on her bank loan. मतलब कि ये थ्योरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंटरप्रेन्योर हो तो आपको रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलेगा, प्रॉफिट के फॉर्म में। अगर आपके पास लैंड है तो उसका रिवॉर्ड रेंट के फॉर्म में मिलेगा, और कैपिटल है तो उसका जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, और आप लेबर हो तो लेबर का जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वेजेस के फॉर्म में मिलेगा। ये थियरी बताता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय गाइस।